हेलो स्टूडेंट्स, मैं त्रिलोक पटेल एमजीसीआई के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम इस वीडियो में जेईई एडवांस 2024 पेपर 2 का मैथमेटिक्स सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में हमें केवल प्रिंसिपल वैल्यूज यूज करके इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 cos इनवर्स 2 बाय अंडर रूट 5 है। तो इसमें हम यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज करेंगे और इसको कन्वर्ट कर लेंगे cos इनवर्स 2x स्क्वायर यानी 2 इंटू 4 बाय 5 माइनस 1, यानी कि ये एक्सप्रेशन कन्वर्ट हो जाएगा cos इनवर्स 8 बाय 5 माइनस 1, यानी कि cos इनवर्स 3 बाय 5। और cos को कन्वर्ट कर लेंगे यहाँ पर हम, तो cos में ये कितना हो जाएगा, 10 में कन्वर्ट करें अगर हम तो tan इनवर्स ये बेस तो परपेंडिकुलर रहेगा 4 बाय 5। और यहाँ पर इस साइन को भी हम 10 में कन्वर्ट कर लेंगे तो फाइनली ये मिलेगा हमें tan इनवर्स ऑफ 3 बाय 4 और ये कन्वर्ट हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 4 बाय 3। ठीक है, इन दोनों को 10 में कन्वर्ट कर लिया। अब यहाँ पे tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इसका फॉर्मूला यूज करेंगे हम। तो tan ऑफ tan इनवर्स x माइनस y यानी 3 बाय 4 माइनस 4 बाय 3 अपॉन 1 प्लस 3 बाय 4 इंटू 4 बाय 3। तो tan ऑफ tan इनवर्स यहाँ मिलेगा 9 माइनस 16 यानी माइनस 7 अपॉन 12 अपॉन यहाँ पर आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर 2 मिलेगा हमें। तो फाइनली क्या देखा है हमने कि tan ऑफ tan इनवर्स माइनस 7 अपॉन 24। तो फाइनली आंसर कितना आएगा, माइनस 7 बाय 24, यानी कि आंसर बी सही है। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी कैटेगरी का क्वेश्चन हम बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि ये एरिया अंडर द कर्व का क्वेश्चन है और यहाँ पर हमें 2 पैराबोला दिए हुए हैं, साथ में स्ट्रेट लाइन दी हुई है। तो इनके अंडर का एरिया हमें कैलकुलेट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4x। इसको अगर हम प्लॉट करें तो ये इस तरह का एक पैराबोला बनेगा। साथ में एक पैराबोला और दिया हुआ है वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू, अगर इसमें -2 कॉमन ले लें तो ये बचेगा x माइनस 6 और यहाँ पर इसका जो वर्टेक्स है 6,0 है। तो कुछ इस तरीके से सेकंड वाला पैराबोला बनेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसका वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट है 6,0। अब यहाँ पर हम इन दोनों को कैलकुलेट करके पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x अगर यहाँ पुट करते हैं हम तो यहाँ मिलेगा हमें 4x इज इक्वल टू 12 माइनस 2x और x की वैल्यू मिल जाएगी 2x प्लस 4x इक्वल टू 12, फाइनली x इक्वल टू 2। तो ये पॉइंट जो रहेगा, एक तो आ गया 2 और x की वैल्यू 2 रखने पर फंक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं तो x की वैल्यू 2 रख दो तो y स्क्वायर अपने को मिलेगा 8, यानी y इक्वल टू फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या मिल जाएगा, √8। तो 2 कॉमा √8 ये किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है। अब ये पॉइंट, अच्छा लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। अब लाइन जब ड्रॉ करेंगे तो लाइन में जब हम y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, 5। तो लाइन कुछ इस तरीके से बनेगी, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये लाइन को सेटिस्फाई भी कर रहा है। तो ये पॉइंट कितना आ जाएगा, 5,0 आएगा। अब हमें कौन सा एरिया कैलकुलेट करना है ये देखते हैं। एरिया की अगर हम बात करें तो इसको ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है और अगर दूसरा पॉइंट सेटिस्फाई करवाएंगे 5,0 तो इसको 5,0 भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस कर्व के राइट साइड वाला एरिया हमें लेना है। इसको ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब इस लाइन के इस साइड वाला एरिया लेंगे और इस कर्व को भी ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब कर्व के इस साइड वाला एरिया हमें लेना है। तो फाइनली जो कॉमन एरिया बनेगा इसके अंदर
वो ये एरिया बनेगा। इतना एरिया हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब ये कैलकुलेट कैसे हो सकता है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, इससे यहां पर एक ट्रायंगल बन जाएगा। ये आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है और ये 90 डिग्री का है, तो इस वाले ट्रायंगल का एरिया अलग निकल जाएगा। और साथ में यहां पर हम देख रहे हैं इस कर्व के अंदर का एरिया निकालना है अगर अपने को, तो एरिया अंडर द कर्व से लिमिट क्या हो जाएगी, 0 से 2 हो जाएगी, और y के अंडर हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे, 0 to 2 लिमिट ले लेंगे और यहाँ पर जो भी y की वैल्यू निकालेंगे उसका इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। तो किस तरीके से देखते हैं, तो यहाँ पर ये जो कर्व है ये कौन सा वाला है, y² इक्वल टू 4x वाला है, तो यहां से y की वैल्यू मिलेगी अपने को √2x। ये जो शेडेड एरिया आपको दिख रहा है ये पूरा एरिया निकालने के लिए, एरिया यहाँ पे जब निकालेंगे तो ये 0 to 2 इंटीग्रेशन √2x इंटू dx, तो इससे क्या होगा, ये पूरा एरिया निकलेगा। ये जो एरिया दिख रहा है आपको, ये पूरा एरिया किससे निकल जाएगा, इस इंटीग्रेशन से निकल जाएगा, प्लस इसमें हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 2 है तो ये वाला पॉइंट भी कितना हो जाएगा, ये 5,0 है, ये लेंथ जो रहेगी वो √8 रहेगी, और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यहाँ पर पॉइंट है 5,0 और ये है 2,0, मतलब ये डिस्टेंस जो यहाँ पे दिख रही है आपको, ये वाली डिस्टेंस ये 3 यूनिट रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमें एरिया कैलकुलेट करना है तो 1/2 हाइट कितनी है इसकी, √8 है, इंटू में इसकी जो विड्थ है या बेस है, बेस की लेंथ कितनी है, 3 है। बस इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो पूरा जो आंसर आएगा हमारा वो पूरा कैलकुलेशन कर लेना, तो 17/3 √2 ये अपने को फाइनल आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि इसका जो एरिया है वो a√2 के फॉर्म में है, तो हमें यहाँ पे अल्फा की वैल्यू निकालनी है। तो एरिया कितना है, अल्फा √2 के फॉर्म में है, तो अल्फा की वैल्यू कितनी मिल जाएगी अपने को, अल्फा इक्वल टू 17/3, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक मॉडरेट क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन इसको भी नहीं बोल सकते हम, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चलिए तो अगले क्वेश्चन में हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये एक लिमिट का क्वेश्चन है और ये भी एक आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर अगर हम फॉर्म चेक करें, डायरेक्ट वैल्यू पुट करके देखें तो हमें मालूम चलेगा कि ये 1⁻∞ वाला फॉर्म है। इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो फंक्शन दिया हुआ है, अच्छा इसमें केवल हमें राइट हैंड लिमिट ही निकालना है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस साइन के x प्लस cos x प्लस x, यहां पर +1 और -1 करना पड़ेगा, तो यहां पर हमने कर दिया -1 और साथ में कर दिया +1। पावर कितनी है, 2/x इक्वल टू इसके कुछ वैल्यू दे रखी है e⁻। इसको सॉल्व करने के लिए e⁻ लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, केवल हमें राइट हैंड लिमिट निकालनी है, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा 2/x साइन के x प्लस cos x प्लस x माइनस 1 इक्वल टू e⁻⁶। पावर कंपेयर कर ले, पावर कंपेयर करेंगे तो मिलेगा हमें लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 2/x। यहां पर फॉर्मूला बनाने के साइन के x अपॉन में क्या लाना पड़ेगा, साइन के x। अब यहां पर साइन के x का मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो नीचे भी हमें के एक्स लाना पड़ेगा ताकि ये फॉर्मूला बन जाए, इसके लिए भी हमें के एक्स का मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। और साथ में यहां पर हम देख रहे हैं cos x माइनस 1 प्लस x, ठीक है, इज इक्वल टू कितना 6, क्योंकि पावर को कंपेयर किया हमने। अब इस x को भी अंदर ले चलते हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, तो 2x का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा साइन के x अपॉन
साइन के एक्स, यहाँ पर साइन के एक्स वाई के एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक्स तो के बचेगा, और यहां मिलेगा cos x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। यहाँ पर इसकी लिमिट हो जाएगी 0, क्योंकि x से मल्टीप्लाई x से डिवाइड करेंगे अपन, तो ये लिमिट 0 होती है, और x टेंड टू 0 सब जगह पुट करने पर ये पूरा 1 हो जाएगा, 1 इंटू के प्लस 1, और इक्वल टू कितना दिया हुआ 6, तो बाहर 2 है, 2 इंटू के प्लस 1 इक्वल टू 6, तो के प्लस 1 इक्वल टू 3, के की वैल्यू कितनी मिलेगी 2। ठीक है, 2 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन एक फंक्शन दिया हुआ है, और इस फंक्शन में हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर साइन पाई बाय एक्स स्क्वायर इफ एक्स नॉट इक्वल टू 0, और एक्स इक्वल टू 0 है तो 0। और इस फंक्शन के बेसिस पर हमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं बताना है कि कौन से वाले ऑप्शन सही है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम फर्स्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन इन द इंटरवल दिस, तो पहले अपन इस फंक्शन के सॉल्यूशन निकालते हैं। एक्स स्क्वायर साइन पाई बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 क्योंकि हमें दिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, तो सॉल्यूशन निकालेंगे, ये 0 तो हो नहीं सकता क्योंकि नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये वाली वैल्यू 0 होगी, तो ये वैल्यू अगर 0 है तो साइन पाई बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, तो पाई बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा n पाई। यहां पर हम बोल सकते हैं कि x इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ n, ये इसका सॉल्यूशन आया। अब ये जो वैल्यू आई है हमारे पास, इसको सभी इंटरवल में चेक करते हैं किसमें सही है। तो सबसे पहले इसमें x दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 इस इंटरवल के अंदर लाई कर रहा है सॉल्यूशन, तो ऐसा करते हैं, इसको सेटिस्फाई करवा के देखते हैं। तो 1 अपॉन रूट n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 अपॉन 10 टू द पावर 10 लेस देन इंफिनिटी। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे मिलेगा 1 अपॉन 0 0 लेस देन कितना आएगा 1 अपॉन इंफिनिटी 0, और यहाँ पर आएगा 10 टू द पावर 10। तो 0 से 10 टू द पावर 10 की अगर हम बात करें तो 0 से 10 टू द पावर 10 में यहाँ पर कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, यहाँ पर लिमिटेड सॉल्यूशन होंगे, क्योंकि यहाँ पर कितना है 1 अपॉन इंफिनिटी 0 से लेके 10 टू द पावर 10 में नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आएंगे, इसके लिमिटेड सॉल्यूशन आएंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, तो इस इंटरवल के अंदर लिमिटेड सॉल्यूशन आएंगे, इसलिए ये आंसर सही। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 हैज नो सॉल्यूशन इन द इंटरवल 1 अपॉन पाई कॉमा इंफिनिटी, इस इंटरवल के अंदर कोई सॉल्यूशन नहीं है, अपनों को ये बताना है। तो 1 अपॉन पाई से इंफिनिटी में चेक कर लेते हैं। 1 अपॉन पाई ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आएगा 1 अपॉन अंडर रूट n लेस देन इंफिनिटी, तो ये हो जाएगा। जब इसको रेसिप्रोकल करेंगे अपन तो 1 अपॉन इंफिनिटी 0 आएगा, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ग्रेटर देन 1 अपॉन रूट n लेस देन पाई, स्क्वायरिंग करेंगे तो 0 लेस देन n पाई स्क्वायर। तो पाई स्क्वायर के बीच में ऐसे बहुत सारे इंटीजर पॉसिबल है, पाई 0 से पाई स्क्वायर में यहाँ पर बहुत सारे ऐसे इंटीजर पॉसिबल होंगे जिनके सॉल्यूशन इसके अंदर लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला आंसर भी सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है नो सॉल्यूशन, लेकिन हम देख रहे हैं कि m की वैल्यू 0 से पाई स्क्वायर में बहुत सारी हो सकती है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे इंटीजर यहाँ पर पॉसिबल हैं जो कि 0 से बड़े होंगे और पाई स्क्वायर से छोटे होंगे, ये वाला आंसर भी गलत हो गया। ठीक है, अब सी वाले की बात करते हैं। सेट ऑफ सॉल्यूशन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 इन द इंटरवल 0 से 1 बाय 10 टू द पावर 10। अब इसको चेक करते हैं इसके अंदर कितने सॉल्यूशन पॉसिबल हैं। तो यहाँ पर 0 से 1 बाय 10 टू द पावर 10 के बीच में 0 से बड़े 1 अपॉन 10 टू द पावर 10, इनका रेसिप्रोकल करें अगर हम तो यहाँ पर आएगा 0 10 टू द पावर 10 और अंडर रूट ऑफ n इंफिनिटी। तो 10 टू द पावर 10 और इंफिनिटी के बीच में बहुत सारे सॉल्यूशन पॉसिबल हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है द सेट ऑफ सॉल्यूशन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 इन द इंटरवल 0 से 1 बाय 10 टू द पावर 10
इज फाइनाइट। तो यहाँ पर फाइनाइट लिखा हुआ है, जबकि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 10 टू द पावर 10 से इनफाइनाइट में बहुत सारे सॉल्यूशन यहाँ पर पॉसिबल हैं। अब लास्ट ऑप्शन चेक कर लेते हैं अपन। लास्ट ऑप्शन में दिया हुआ है f of x equal to 0 has more than 25 solution in the interval। वैसे भी देखा जाए सिंगल करेक्ट का क्वेश्चन है और 3 आंसर गलत हो गए हैं, तो फोर्थ वाला आंसर सही है। ठीक है, फिर अपन इसको चेक कर लेते हैं कि 1 अपॉन पाई स्क्वायर से 1 अपॉन पाई के बीच में, 1 अपॉन पाई स्क्वायर से 1 अपॉन पाई के बीच में तो यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे पाई रूट एन लेस देन पाई स्क्वायर, और एन की वैल्यू निकालना है अपने को, तो पाई स्क्वायर लेस देन एन पाई टू द पावर 4। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इन दोनों इंटरवल्स, इस इंटरवल के अंदर एन की बहुत सारी वैल्यू पॉसिबल है, जो कि 25 से ज्यादा आराम से होगी, है ना। तो मोर देन 25 सॉल्यूशन रहेंगे इस इंटरवल के अंदर। तो यहाँ पर डी वाला आंसर पॉसिबल है। ठीक है, तो क्लियर है। हेलो बच्चों, तो अब हम आगे का मैथ्स का पेपर 2 JEE 2024 हम सॉल्व करेंगे। तो ये लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल अल्फा बीटा बिलोंगिंग टू आर क्रॉस आर, मतलब all real numbers such that limit x tends to infinity sin x square etc. this is equal to 0. Then which of the following is correct? तो हमको क्या करना है, इस लिमिट को, एक्चुअली लिमिट को इवेल्यूएट करने के बाद 0 आएगा, तो हमको अल्फा बीटा की रेंज जो है वो बतानी है कि अल्फा बीटा क्या क्या हो सकते हैं, राइट। सो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी साइन है, तो लेट मी राइट दिस लिमिट itself is equal to limit x tends to infinity. Now इसको हम रीअरेंज करते हैं एक्सप्रेशन को, तो कैसे रीअरेंज करेंगे इसको? Now sin of x square, sin of x square, this is x tending to infinity, this is a finite number, okay, so let this be here itself. Right, now sin of 1 by x square, तो sin of 1 by x square, इसको सेट करने के लिए, because 1 by x square is tending to 0, then that means we have to divide and multiply, divide by 1 by x square and multiply by 1 by x square, right। तो ये जो लिमिट है sin of 1 by x square divided by 1 by x square, this as x tends to infinity, this will tend to 1, this will be finite, so this expression is finite, this is tending to 1 by x square. Now let us come to other things. तो यहां से we have got x alpha beta, तो ये है हमारे पास x raised to alpha beta, all right। then what we have log e x raised to alpha, यहां से हमारे पास है log e x raised to this whole raised to alpha and log e 1 plus x whole raised to beta, right। this whole thing should be equal to 0, तो ये जो पूरी चीज है वो 0 होनी चाहिए। तो इसमें से this expression has been set out, this expression also has been set out, okay। now we have to check out कि यहां पे क्या होगा। तो इसको, इस पोर्शन को तो we know that this will be now 1 and finite, now we have to put this must be such that this should come equal to 0, so let us write that out। so यहां से हम इसको लिख सकते हैं, this expression 1 by x alpha beta plus 2, all right, this is alpha beta plus 2, okay, and log e x alpha divided by log e 1 plus x whole thing is beta. Let us see each and every portion, because the other thing, this big bracket has been is 1 into finite, so this has to be equal to 0, so we have to make sure that this limit x tends to infinity, this expression is equal to 0, okay। now एक तो इसमें ये आ गया कि log let us
check the answers with this, right? तो हम अगर आंसर्स चेक करते हैं तो हमको ऑलरेडी पता है कि अल्फा बीटा प्लस 2 इफ दिस इज ग्रेटर देन 0, मतलब अगर अल्फा बीटा प्लस 2 इज पॉजिटिव, तब ये x टेंडिंग टू इंफिनिटी, दिस एक्सप्रेशन विल टेंड टू 0. All right or not? And log e tend to x and log e tend to log e is 1 plus x. This both are tending to infinity. This bracket is tending to infinity and this bracket is also tending to infinity. So let us particularly check the answers कि अल्फा बीटा का क्या होने से क्या हो जाए. So if I take let's say -1 3, अल्फा इक्वल टू -1 and beta इक्वल टू +3, तो क्या होगा? अल्फा बीटा -3 plus 2, -3 plus 2 is -1. दिस एक्सप्रेशन -1 आने से तो न्यूमरेटर में इंफिनिटी आ जाएगा, सो दिस इज नॉट पॉसिबल. ऑप्शन ए इज नॉट पॉसिबल जस्ट बिकॉज -1 plus 3 into 3, alpha beta is -3 plus 2, that's -1. This option is not possible because this will go into the numerator and the whole thing will not tend to 0 because x की power is going to this. Okay, now let's check B. Alpha beta here, alpha into beta, alpha is -1, beta is +1, so alpha into beta is equal to -1, so alpha beta equal to -1, so 2 minus 1, alpha beta plus 2, in this case alpha beta will be equal to -3. In this case, alpha beta will be equal to -1. In this case, alpha beta again equal to -1. In this case, alpha beta is equal to -2. Again, we see that alpha beta equal to -2. The last option is also not possible because यहाँ पे alpha beta plus 2 will get 0 and this expression will be 1. So this cannot be equal to 0 again. All right or not? So finally we come to two options, alpha beta equal to -1, alpha beta equal to -1. यहाँ पे so for both these options alpha beta plus 2 is equal to +1, right? So in denominator 1 by infinity, so this expression will tend to 0. Okay, and since log e x and even if we put say -1, alpha equal to -1, so alpha equal to -1, but this also comes to denominator, and beta equal to +1, so that is already in the denominator, so this will definitely change to 0. That means B is the correct option. And let's come to C. So C में alpha equal to +1, this is +1, okay, and beta equal to -1, so this is -1. But even in this case, you see alpha equal to +1 के केस में the numerator में this is tending to infinity and this also goes to numerator. But let me just show you that even if we have say log ex का स्क्वायर divided by x, limit x tends to infinity, just to show that even in that case this will tend to 0. So let us x tends to infinity, the numerator and denominator both are tending to infinity here. But then if we apply L'Hospital's rule and differentiate this, this should be equal to limit x tends to infinity 2 log e x divided by x into 1. Right or not? We can differentiate the numerator as well as differentiate the denominator. This also if we evaluate, this is coming to equal to 0. All right or not? इसका मतलब even if you have a square of log e x in the numerator and only 1x in the denominator, the limit tends to 0. So let's go back. Just with this input, let us go back and understand that as long as there is alpha beta plus 2 is equal to 1, this limit, although it is even if it goes both to the numerator infinity into 0, this will give 0 only. So the answer to this question must be B and C both. So the answer to this question will be B and C.
Let's go to the next question. So a straight line, let us do this question 6th. Straight line drawn from the point 1, 3, 2 parallel to the line x minus 2 by 1, y minus 4 by 2, z minus 6 by 1 intersects the plane L1 x minus y plus 3z equal to 6 at this point Q. Let us find out this point first. So if this is parallel to this and passing through 1 to the straight line parallel to this line, x minus x minus 1 by 1 equal to y minus 3 by 2 equal to z minus 2 divided by 1 equal to lambda. So that will be the straight line which will be passing through 1, 3, 2 and parallel to the line given. Okay, 1, 2, 1. So 1, 2, 1 here, right? So a point, arbitrary point on this line will be 1 plus lambda, 3 plus 2 lambda and 2 plus lambda. This is the line. This point now 1 plus lambda, 3 plus 2 lambda and 2 plus lambda. To get the point Q, this must satisfy x minus y plus 3z equal to 6. So this should satisfy x minus plus 3z equal to 6. Let us put this 1 plus lambda minus 3 minus 2 lambda plus 6 plus 3 lambda equal to 6. Okay, so that gives us how much? 1 minus minus 2, 4. 4 and lambda minus lambda plus 2 lambda is equal to 6. So lambda equal to 1. So once we get lambda equal to 1, the point Q should be, if you put lambda equal to 1 here, this should be 2, 5, 3. So 2, 5, 3. This should be first your point Q. So we have got the point Q here. Q is 2, 5, 3. Now let us come to the next point. Another straight line which passes through Q. This time it is passing through Q and is perpendicular to the plane L1. So perpendicular to this, obviously, is intersects the plane L2, 2x minus y plus z equal to minus 4 at point R. So we have to find out now R point. To find out the R point, we have to pass a straight line 2, 5, 3 and perpendicular to this plane. So obviously the direction cosines of a line which is perpendicular to this plane will be 1 minus 1, 3. I hope you can understand. This is direction cosines of a line normal to this plane will be 1 minus 1 is 2 minus 1 is 2, 3. Alright, and the point is 2, 5, 3. So let me just solve for R. So let's get, so we have got the line Q point here is 2, 5, 3 and the direction cosines are 1 is 2 minus 1 is 2. How much? Let's check that again. 1 is 2 previous. So previous 1 is 2 minus 1 is 2, 3, 2, 5, 3. So 1 is 2 minus 1 is 2, 3. That means we can write out this equation of the line x minus 2 by 1 equal to y plus 1 by 5 equal to z minus 3 by 3. Am I correct? Right. So we have got x minus 2 by 1, y minus 5, y minus 1 equal to z minus 3 by 3. Now this is correct. So let's say this be equal to some, let us take, let's say this we can take as some k. Alright. So a point on this line would be k plus 2 and another point on this line would be 5 plus k and another point on this line would be 3 plus 3k. So this is a point on this line. Now this point has to satisfy another plane L2. So let us write out what is L2. So L2 is equal to, so let us go back and check up what is L2. So if we
check up L2. L2 is 2x minus y plus z equal to minus 4. So 2x minus y plus z equal to minus 4. This is your point L2. This point should satisfy. So this is equal to how much? Now we can write 2 into k plus 2 minus 5 plus k plus 3 plus 3k equal to minus 4. This is what the equation we get, right? So 2k plus 3k, 5k, 2k minus k, k plus 3k, 4k. So 4k, 4 minus 5, minus 1. I think we have made a small mistake here. So let us erase this. This was 5. This is 5 minus k. So this is 5 minus k. This is 5 minus k. So we can write out here 5 minus k. Alright. And plus. So plus 3 plus 3. So we get this equation. We have to, so what is it? 2k plus k, 3k plus 3k, 6k. Let us do this. 6k, 4 minus 5 minus 1 plus 3 plus 2 equal to minus 4. K equal to minus 1. This is what we get. K equal to minus 1. So once we get k equal to minus 1, this point R should be equal to, this is 1, k equal to minus 1, putting k equal to minus 1, this is 6 and this is 0. So this is the point we get. R is 160. Okay, right. So now R is this and Q we already had. So Q point we already had with us as 253. 253, right? And P point we already had. P point we already have with us as how much? P point we already have with us is 132. 132. Okay, 132. So length PQ. So let's find out what is the length PQ. So PQ equal to, this is PQ equal to, what is PQ equal to? 2 minus 1. 2 minus 1 का whole square plus 5 minus 3 का whole square, PQ square, and 3 minus 2 का whole square. 3 minus 2 का whole square. This is equal to how much? 2 minus 1 का whole square. This is 1 plus 4 and plus 1 equal to 6. PQ square. So PQ equal to under root 6. This is one thing we are getting. Let's go back and check the options. पीछे जाके ऑप्शन चेक कर लेते हैं. PQ is 1 is root 6. Very good. So A is a correct answer. PQ is equal to root 6. Alright. So A is the correct answer. Let us go back to the coordinates of R. So coordinates of R we already found out as equal to 160, not 163. So that means B is not correct as the coordinates are 160 and this is wrong. Okay, so this option is wrong. Now let's find out the centroid of the triangle PQR. So we have all the points in the next slide. So let us calculate the centroid. Centroid is nothing, x1 plus x2 plus x3 by 3. So centroid, so let me write here, centroid of triangle PQR. Centroid of triangle PQR is 1 plus 1 plus 2, 4 by 3. Okay. 3 plus 6, 9 plus 5, 14 by 3. 14 by 3. And 2 plus 0 plus 3, 5 by 3. So centroid has to be 4 by 3, 14 by 3 and
5 by 3. Alright. So let us check the option. So checking the option 4 by 3, 14 by 3, 5. Very correct. Right. So the option centroid of the triangle PQR 4 by 3, 14 by 3, 5 by 3 is correct. Now let us check the perimeter of the triangle PQR. The perimeter of the triangle also we can go back to the next slide and check. Okay. So let us go back to the next slide and check. The perimeter of the triangle PQ is coming as equal to root 6. So let us also calculate QR and RP. So what is QR? So QR, let me check QR. So QR, let us check here itself. QR is equal to, what is QR? So Q to R. So 2 minus 1 का whole square, 5 minus 6 का whole square, QR square, 2 minus 1 का whole square plus 5 minus 6 का whole square, 5 minus 6 का whole square plus 3 minus 0 का whole square. So 3 minus 0 का whole square. This is nothing but 1 plus 9 equal to 11. So QR equal to under root of 11. Right. Let's also calculate, find some space to calculate RP. So RP. So QR we have already calculated. Now let us calculate RP. Right. So RP. So let me calculate here. PR square. So we are calculating PR square. So this one. So this is coming as equal to 0, 1 minus 1, 0, 3 minus 6. So that is 3 square plus. And we have got 2 minus 0 ka square. So 2 minus 0 ka square. This is coming as 9 plus 4, 30. So this is 30. So the answer to PQ plus PR plus QR should be equal to under root 6 plus under root 13 plus under root 11. So the perimeter should be how much? The perimeter should be equal to under root 6 plus under root 13 plus under root 11. Let us 6 under root 6, under root 11, under root 13. Let us go back and check. Okay. So checking that under root 6 is there, under root 11 is there, but under root 13 is not there. So this is wrong. So this option is wrong. So what should be the answer to this question? The answer to this question should be A, C. Okay, bachcho. Let us go to the next question. Okay, question number 7. Question number 7. So we are coming to question number 7. Let A1, B1, C1 be 3 points on the XY plane. Suppose that the lines A1, C1 and B1, C1 are tangents to the curve y square equal to 8x at A1 and B1 respectively. If O equal to 0, 0 and C1 equal to minus 4, 0, then which of the following statements are true? Obviously, y square equal to 8x is a parabola, standard parabola, okay, and C1 is a point lying on the x-axis. That means let us make this standard figure here. So this is your parabola. Let's say this is the point minus 4, 0. That's C1 minus 4, 0. That is the point here, minus 4, 0. And let us put two tangents. So this is your origin, and let us put tangent here, and so tangent here. This is the point. Okay. This is your point A1. This is your point E1. Alright. And the parabola is y square equal to 8x. So this is your y square equal to, alright. Okay. Right. So this is your parabola. Now
the length of the line segment OA1. So OA1. So we have to calculate length of this line segment. So basically we have to calculate where the tangents from this point hit. So obviously we know the equation of the tangent here. The equation of the tangent is what? Suppose we take this point as AT square 2AT. Obviously this point B1 will be equal to AT square minus 2AT. Symmetry tells us because the C1 point is lying on x-axis, these have to be symmetrical. So AT square 2AT and AT square, so we have to just calculate one point. So calculating this point, we know that the slope of the tangent at A1 must be equal to how much? 1 by t. The slope is 1 by t. The slope is 1 by t. So let us write out directly the equation of if we want to find out the value of t here. So AT square and 2AT. So 2AT minus 0 divided by AT square minus 4. So that's plus 4 equal to 1 by t. I hope this should be very simple. We are just finding out the slope. The slope of the tangent is 1 by t and the slope between these 2 points is equal to this, right? So we can cross multiply 2AT square is equal to AT square plus 4. Okay. So A. Now what is A? So A here we know that y square equal to 4ax is the standard parabola. So this is 4 into 2 into x. So that means A equal to 2. So let us put A equal to 2 here. So we get what? 4t square, 2t square. So 2t square equal to 4. 4t square minus 2t square equal to 4. So t square, t equal to plus minus root 2. Plus minus, fine. So t equal to plus minus root 2. So what should be this point? This should be 2 into 2. Is 10. So this should be 4 and 4 root 2. 4 root 2. This should be 4 minus 4 root 2. That should be the point. Okay. So the length of the line segment. So if we want to find out this length, the length of this line segment OA1. So OA1, length of the line segment OA1. So if we want to find out the length of the line segment OA1, what we need to do simply is find out the distance of point 4 root 2 with 0. So what should be the distance? Directly we can calculate square of 4 plus square of 4 root 2. So this distance should be equal to 4 common, 2 plus 1 kind, 4 root 3. The distance is 4 root 3. So A is correct. The distance of A1 from O must be equal to 4 root 3. Fine. The length of A1 B1. The length of A1 B1, we know that 4 root 2 plus 4 root 2. Length of A1 B1 must be equal to 8 root 2. Right. So what is the length of A1 B1? This is not correct. The actual length should be 8 root 2. So this is not correct. The option B is incorrect. Okay. The orthocenter of the triangle A1 B1 C1, and the D option is also the orthocenter of the triangle A1 B1 C1. So obviously the orthocenter, that means what we need to do is make a, let us just use another color, and this is the line A1 B1 C1. So if I have to find out the orthocenter, we have to draw obviously the normal, the altitude from here.
So altitude from here matlab on this line or on this line we have to draw a perpendicular. So let us take this point and draw a perpendicular to this line. This is your 90 degree. Can you understand this? I think, right. So the ortho center here, because perpendicular to this is here, so this should be the ortho center. So we have to find out the coordinates of this point, right. This is your ortho center. Right. Let's call this H, ortho center. Okay. So ortho center is the point H here. So what we need to do is find out the equation of the line. Let's say, let's call this point D, D1. Okay. So A1 D1, right, which is perpendicular to B1 C1. Okay. Fine. So if we find out the equation of that line, what will be the equation of the line connecting these points? So let us first find out the slope of this. So since t was equal to minus root 2 here, how much is the t here? Minus 1 by root 2. So the slope of this line, is minus 1 by root 2, right? Slope of this line minus 1 by root 2. So minus 1 by root 2, and the slope of this line will be plus root 2. So slope of this line is plus root 2, and let's go from here. So that means let us just find out y minus 2 root 2 is equal to root 2 x minus 4, right? This is what we are getting. Okay. So solving this equation, we get y equal to x root 2. Minus 4 root 2 and minus 4 root 2 get cancelled. So this line crosses the x-axis at 0, 0. The 0, 0 is a point which is lying on the x-axis. The ortho center, that clearly means must be, that means this line, although the figure may not be correct, but this line should cross, this same line here should cross, this should be 90 degrees. So the ortho center should be, what should be the ortho center here? 0, 0 and not 1, 0. So let us just take pen here and write. A1, this is correct and this is wrong. The ortho center we have calculated to be 0, 0 and not 1, 0. So that is correct. So what should be the answer to this question? A, C. This should be the answer to the question, right? Okay, bachcho, so quite an easy problem, this one. Only a little bit of calculation, but I understand that in the register, in your papers, this can be done quite fast. Okay, not very difficult. So let us go forward to question number. Okay, let us go forward to question number 8 here. So the question number 8 is saying that let a function be there from real to real numbers, be a function such that f of x plus y equal to fx plus fy for all x, y belonging to R, and g is R real numbers to 0, infinity, be a function such that g of xy is gx into gy. Okay, for all xy belonging to R. If f of minus 3 by 5 is given and g of minus 1 by 3 is given, then the value of f of 1 by 4 plus g of minus 2 minus 8 into g0 is equal to. Okay, so that means the answer to this must be, see this question, we need not solve completely for f of x plus y, f of x and f of y. What we know that the answer is numerical. If answer is numerical, that means even if I know a function which satisfies this f of x plus y equal to fx plus fy, and if I know a function which satisfies g of x plus y equal to gx into gy, then if then that function I can always use to find out the value of this particular expression which is given. So this expression has g0. So let us find out what is g0. So since 0 it cannot be the value of
any gx. So that means we can say, because it has to be greater than 0. So to find out g0, first let us find out g0. So this is g0 must be equal to g0 ka square, right? So g0 equal to 1. I think very simple, because if something g equal to g square, then there can be two possible values, either 0 or 1. But 0 is not a possible value because this is in the open bracket. So that means g0 must be equal to 1. Firstly, we have obtained this. Now let us say what function satisfies this, right? So f of x plus y equal to f of x plus f of y. So one function which satisfies this, fx equal to, let us take as equal to kx, right? So f of x, k of we know that k of x plus k of y is k of x plus k of y, because k comes common. So f of x will satisfy this. And what function will satisfy g of x? So g of x will be equal to, so any simpler function we take will satisfy it, because we finally we get the numerical values only of this, right? So g of x must be, let's say, let us take a function gx into gy. So since it should come in power, so a raised to, let us take some px. Can we take px? Because we know that uh, px plus py. यहाँ पे e raised to px and py that will come. So this can be one function and this can be. So let us try to get the values of k and p. Simple, right? So since it is given that f of minus 3 by 5 is equal to 12, let us write out here. So f of minus 3 by 5 is equal to 12. So this we can write minus 3k by 5 equal to 12. This gives us k equal to minus 20. Okay. So f of x I have got as equal to minus 20x. Minus 20x. Very important this one. F of x equal to minus 20x. Right. Similarly, let's go to gx. Gx equal to e raised to px. So let us try. What is it? G raised to minus 1 by 3. G raised to minus 1 by 3. That gives us e raised to minus x by 3. Okay, that is equal to 2. So this equal to 2. So obviously then e raised to minus p by 3 equal to 2. So this gives us p equal to p equal to. What is p equal to? So p is coming 3 ln 2 minus 3 ln log to the base c 3 ln 2. So this equal to g of x. So g of x should be equal to how much then? P equal to this. So that means this we can write out. Let's finish this off right here. This is finished. Let's use this. This is coming as equal to e raised to minus 3 ln 2 into x. That should be your function. Simple. Right? So this is your gx and this is your fx. Now what he is saying, we have to calculate f of 1 by 4, g of minus 2. So let us calculate simple. So f of 1 by 4. F of 1 by 4 is nothing but minus 20x. So minus 20 into 1 by 4. So how much is this? Minus 5. Okay, that's very simple. F1 by 4 is coming as equal to minus 5. G of how much? Minus 2. G of minus 2. G of minus 2. So let's put the value minus 2 over here. So we'll get e raised to minus x की जगह we'll have minus 2. So minus 2, 6 ln 2. 6 ln 2. Right? So this is equal to 2 raised to 6. 2 raised to 6 is nothing but 64.
So we have got this value as equal to minus 5. We have got this value as equal to 64. We have got this value as equal to 1. So simple now. Now once we have got this, so let us write out minus 5 plus 64 minus 8 into 1, right? So this will be equal to how much? Let us write this out. Minus 5 plus 64 minus 8 into 1. How much is that? 13. So how much is this value? Okay. So that value is coming as equal to 51. Is that? 64 minus 13, 51. So 51. That should be the answer. So answer to this question must be equal to how much? 51. Okay. I think quite simple. If you don't get involved in finding what is the exact function fx, and because the functions which I have taken, they may not always be the correct answer for fx. There may be many functions which satisfy this, but then since my answer is numerical, I can take any function which satisfies the given condition. Okay, so I have taken convenient functions and I have found out the numerical value. If numerical value is correct, that must be the answer. So 51, right? So the answer here is 51. Let us go to question number 9. Question number 9. Okay, so we are going to question number 9. So what he is saying here, a bag contains n balls, out of which bag contains n balls, out of which 3 balls are white, 6 balls are green, and the remaining balls are blue. Assume that the balls are identical otherwise. Okay. 3 balls are drawn randomly one after the other without replacement. मतलब replace नहीं किया, one after the other. W, G, W suffix I, G I and B I denote the events that the ball drawn in the ith draw is a white ball, green ball and blue ball respectively, with the probability of P, W1, G2, B3. W1, what is the meaning of this? P, W1, G2 मतलब पहली बॉल जो आए वो व्हाइट आए, सेकंड बॉल जो आए वो ग्रीन आए और थर्ड बॉल जो आए वो ब्लैक आए या ब्लू आए, सॉरी ब्लू आए, ब्लू. And conditional probability that B3, W1, G2, conditional probability that अगर पहली बॉल व्हाइट आ गई और सेकंड बॉल ग्रीन आ गई तो थर्ड बॉल ब्लू आ जाए, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? दैट इज द थर्ड बॉल ब्लू आई है तो फर्स्ट बॉल व्हाइट आए और सेकंड बॉल ग्रीन आए, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी? दैट इज गिवन एज इक्वल टू 2/9. देन n इक्वल्स, सो दैट शुड बी आई थिंक क्वाइट सिंपल, ऐसा मैं सोचता हूं, राइट? सो व्हाट शुड दिस बी? सो लेट अस कैलकुलेट the value here. Okay, so how we can calculate the value here? So B3 2/5n तो हमको दिया हुआ है, so so obviously the probability is this is so this is equal to how much? So let me directly, this question seems quite, see this, the expression, let me write here complete. P B3 W1 intersection G2 is equal to, how much is this equal to? This is equal to, how much is this equal to? This is directly I think equal to this one, P W1 intersection G2 intersection, sorry, intersection how much? B3 divided by P W1 intersection G2. I think this should be quite easy, right? This is equal to, given as equal to how much? This expression is given as equal to 2/9. So this becomes very simple now. Okay, this is given as equal to 2/9 and this is given equal to 2/5n. So this we can calculate. So let us calculate this one. So this is equal to, finally this is equal to
from here. So how much is this given? 2 by 5n. Let us write out 2 divided by 5n. That is the numerator here. This is the numerator. Okay, divided by. So W1. Now obviously, if we have 3 balls are white and 6 balls are green and bag contains n balls. Obviously, then we have here 3 balls are white and 6 balls are green and remaining balls. So remaining balls are how much? N minus 9 balls are blue. N minus 9 balls are blue. So total W1. So in the first chance, which we should get what? We should get white ball. So white ball we can get is how much? What is the probability of getting a white ball? Is how much is the probability of getting a white ball? Obviously, 3 by n. What is the probability of getting a white ball? So we should write this 3 by n. Matlab 3 by n in the, so 3 here and n in the 3 by n. Let me write here completely. 3 by n into this one, right? And the second probability of intersection, probability of getting a green ball in the second turn. So second turn mein one ball is already out. So that is n minus 1. Okay. So out of n minus 1, we have 6 balls are green. So obviously we should get what? 6 divided by n minus 1. 6 divided by n minus 1. Okay. And this should be equal to what? So this should be equal to 2 by 9. This should be equal to 2 by 9. Okay. So fine. So what do we get here? N is cancelled. Okay. And 2 is also cancelled. 9 is also cancelled. So we get n minus 1. Finally, we are getting n minus 1, n minus 1, n minus 1 equal to 10, n equal to 11. It's very simple question, this one. If you know the probability and the meaning of what expression for probability means, this is direct, absolutely. Okay, this equal to this and 2 by 9 is given. So n equal to 11. The answer to this question must be 11. So question number 9 is done very simply. N equal to 11 is the answer for this. Okay, let's go to the next question. 10. 10. Okay, now question number 10 here is, let the function from real numbers to real numbers be defined as fx equal to sin x divided by e raised to pi x plus some expression in the numerator divided by x square minus x plus 3 plus something something, right? So then the number of solutions of fx equal to 0. So fx equal to this sin x. So what we have to do, fx equal to 0 ke number of solutions we have to find. So number of solutions we have to find out. That means what? Fx equal to. So this is coming common. So e raised to pi x, this is coming common, this is coming common. So let us take f of x equal to, finally, if we take whatever is coming common, if we take, then so finally we get sin x plus 2 divided by e raised to pi x, e raised to pi x, x square minus x plus 3. This is denominator is common anyway, and x raised to 2023 plus 2024 x plus 2025. 2025. So this is what is the function when we take expressions common, right? The denominator is common, and whatever is common in the numerator also we take. So this is the function. So here we checked. It's very simple. It seems fx equal to 0, but we have to find it. So let us take function by function. So let me here take function. So if we take e raised to pi x, now e raised to pi x cannot be 0 for any value of x. So
let me just write out here. If I just make e raised to pi x cannot be equal to 0 for any value of x. Okay, right. X square minus x plus 3. We check out this function. The coefficient of x square is positive and discriminant of this, the discriminant of this is negative, right? How the discriminant is negative? So discriminant delta here for this delta discriminant is equal to 1 minus 4 equal to minus 3 less than 0. So this function will always assume all values of x. At all values of x, this function will always be positive. This will be positive. Matlab we can write out x square minus x plus 3 is greater than 0 for all values of x. Right. So this cannot be 0. Right. Now this sin x plus 2, sin x can be from minus 1 to 1. This function also cannot be equal to 0. So all these functions cannot be, this particular enclosure cannot be equal to 0. That means if I want fx to be 0, only this function has to be equal to 0. Right. So let us say now this is a polynomial 2023. So in that case, it can actually become 0 so many times, but let us check out what is the differential. From observation, I can see here, from observation, that at x equal to minus 1, this x equal to minus 1, this function is getting 0. Right. So let me just write this function on the next slide so that we can investigate. X raised to 2023 plus 2024x plus 2025. Let us write out x raised to 2023 plus 2024x plus 2025. This is the function. Let us take this expression, polynomial. Alright. So here I know that at x equal to minus 1, this is minus 1 plus 2024 minus minus 1 minus 2024 plus 2025 equal to 0. So at minus 1, this value at minus 1 it is equal to 0. Okay, at minus 1 this is getting equal to 0. Up, if this function is increasing or decreasing in its domain, then we can say that only at x equal to, where is it turning? So let us find out the differentiation. So let's say y equal to, let's take y equal to, so dy by dx, dy by dx, dy by dx equal to how much? 2023 x raised to 2022 plus 2024. This is the expression, right? This expression we see that the power of x is even, this is a positive number, 2024 is also a positive number. That means for any value of x, this will always be greater than 0 for all values of x. That means this is a increasing function. Increasing function. So what we have here, if it is an increasing function, then automatically we have that this function will be crossing the x-axis only once. Well, if it is at minus 1, it is 0, so it cannot turn. If it cannot turn, the whole expression which we got in the last slide, if we just see, this is an increasing function. So this will intersect with the x-axis only once, and this so if this becomes 0 only once, then automatically the whole function can also become 0 only once at f of minus 1 equal to 0. I hope you understand. This is very simple question, just of a monotonic increment, right? So this answer to this question should be, it is getting 0, minus 1 is not the answer. The answer is that how, what number of solutions of fx equal to 0. So number of solutions is 1 only.
So the answer should be 1. Okay. In fact, let's yes, we are writing answers in red. So let's write the answer 1 here. All right. So the answer to this question is 1. All right. तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11. बच्चों देखो ये जो क्वेश्चन है, let p equal to this vector is given, q vector is also given. If for some real numbers alpha, beta, gamma, we have 15i plus 10j plus 6k equal to alpha into 2p plus q plus beta into p minus 2q plus gamma into p cross q. Then we have to find out the value of gamma. तो अब इसमें सिंपल तरीका ये होगा कि अल्फा, बीटा, गामा तीनों फाइंड करने की बजाय अगर हम पूरे इस वेक्टर का पूरा जो ये एक्सप्रेशन है इसको हम डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं p क्रॉस q से, तो ये जो टर्म है ये 0 हो जाएगी, ये जो टर्म है ये भी 0 हो जाएगी, और इस टर्म से हम गामा की वैल्यू निकालते हैं. मतलब हम क्या कर रहे हैं, देखिए यहां से ये डॉट p क्रॉस q, ठीक है, और ये पूरी चीज दिस ब्रैकेट डॉट p क्रॉस q. तो इससे क्या होगा, बहुत सिंपली हमको अल्फा बीटा से कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, p की वैल्यू दी हुई है और q वेक्टर भी दिया हुआ है, तो दिस टर्म विल गेट 0. ये जो डॉट प्रोडक्ट में दिस टर्म विल कम टू 0, दिस टर्म विल ऑल्सो कम टू 0 because p dot p cross q is 0, q dot p cross q is also 0. So this term will now come what? Plus, this is plus. Now dot product of p dot q, p cross q dot p cross q. So gamma into, now this dot product will be cross q ka whole square. Let us write like this. Now this side, as we do, we can write this dot product of a scalar triple product like this. Let's write out this scalar triple product. So if we write out the scalar triple product, we can write out 15, 10, 6. P is 2, 1, 3. 2, 1, 3. And Q is 1, minus 1, plus 1. So this is your determinant P dot Q, P cross Q dot 15i plus 10j plus 6k, and this is the value here we have obtained. Now let us calculate the value of this. So value of this determinant we can simply calculate here 15 into 1 plus 3 into 4, 1 plus 3, minus 10, minus 10, minus 2, minus 1. So minus 2, minus 1. Okay, and plus 6, plus 6, plus 6, sorry, minus 1, minus, sorry, this is plus 2, minus 3. Is that? Minus 3. Well, let's take minus 10, plus 2, minus 3. Alright, and 6, minus 2, minus 1. So 6, minus 2, minus 1. So this is what we have got. So here we have got, this is 60. Alright, and then when we have got plus 10, and here we have got minus 18. Minus 18 is equal to 70, minus 18 is equal to 52. So value of this determinant is nothing but 52. So this should be equal to, now let us evaluate this one, P cross Q ka whole square. So we can calculate P cross Q also, but I think we can do like this also, that since we have got, simply let us write this out, this will be equal to, so basically we can write out this is 52, so 52 equal to, right, gamma square, sorry, gamma mod P ka whole square into mod Q ka whole square into sine square theta, which is the angle between sine square theta. Theta is the angle between P and Q. So simply what we can do here is write out the mod P. Now what is mod P?
So let us write out mod P here. So if we check here, mod of P is equal to 4 plus 1, 5 plus 9 under root 14. Mod of Q equal to 1 plus 1 plus 1 under root of 3. Okay. And angle between them, we can take dot product to calculate the angle between them. So angle theta between P and Q will be equal to. So let us write out what is the angle. So dot product P dot Q. So 2 into 1 plus minus 1. This is minus 1 and plus 3 divided by under root 14 under root 3 under root 14 under root 3. This is what is the angle cos theta, cos of theta. Okay. So this will be equal to how much? Let us write out. So we can write out sine squared theta. So 52 equal to gamma p square. P square is nothing but 14, 3, alright, and 1 minus cos squared theta. Sine squared theta will be equal to 1 minus cos squared theta. So square this out. So 5 minus 4, 16 divided by 42. 16 divided by 42. So let's multiply this 42 here. So we get gamma 42 minus 16 equal to 52. Right. So this is nothing but how much? 26 gamma. So gamma equal to 2. Gamma equal to 2. So the answer to this question must be 2. देखो बच्चों इसमें ऐसा है कि we can do several methods. तो वहां पे अगर हम सब वेक्टर्स को इवेल्युएट करेंगे तो अल्फा बीटा गामा में हमारे पास साइमल्टेनियस इक्वेशंस आएंगे जिसमें हमको अल्फा बीटा को रिमूव करना पड़ेगा. लेकिन ये मेथड हमने इस तरह से यूज किया है कि जिसमें हमको कुछ भी रिमूव नहीं करना पड़ा और डायरेक्टली वी कैन अराइव एट द वैल्यू ऑफ गामा. तो यहां ये इंपॉर्टेंट है. आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 12. So let us come to question number 12. Now a normal with slope 1 by root 6 is drawn from the point 0 minus alpha to the parabola x square equal to minus 4ay, where a greater than 0. Let L be the line passing through 0 minus alpha and parallel to the directrix of the parabola. Suppose that L intersects the parabola at 2 points A and B. Let R denote the length of the lattice rectum and S denote the square of the length of line AB. If R is to S equal to 1 is to 16, then the value of 24A is okay. So let us find out what is it. Okay. So are we using 0 alpha and 4ay, a greater than 0. So let us draw this parabola first. Okay. So since it is x square equal to minus 4ay, obviously it is a downward opening parabola. So let us just form the figure first. Right. So this is the figure. Let us take, say, this, and from here let me try to draw a parabola like this. So this is your x-axis, this is your y-axis. Now obviously since it is minus 4ay, so the focus should be 0a and the directrix should also be parallel to x-axis and at a distance of a from here. So this directrix, this is the directrix. So this should be equal to y equal to a. Right. Now what he is saying is अब हम देख लेते हैं क्या है. So a greater than 0. So let L be the line passing through 0 minus alpha. So there is some point 0 minus alpha. वहां से there is a line passing. So let us take this as 0 minus alpha. This is the line parallel to the directrix.
this point is A, this point is B, this is your lattice rectum, okay, this point is nothing but 0 minus A, right, and this point is nothing but 0 minus alpha, right, this point, and this point is 0 minus A, okay, fine. So I think figure is clear to you, okay. Now suppose the normal with a slope 1 by root 6 is drawn from 0 minus L. That means from this point we have to draw a normal, alright or not. So let us draw a normal from this point. So this point, say if we draw a normal, let me try with a different color, okay. So this normal, let's say it is something like this. I don't know whether how this will be, but let me draw a normal like this, right. So this is what he's saying is the slope is 1 by root 6. So let me take the parametric coordinates of this point. Let's say this normal hits at some point P, and the parametric coordinate, if we check from here, if we take y equal to minus t, let us take y equal to minus t. If we take y equal to minus t square, so I'll take minus 80 square. So minus 80 square will give us 280. So let me write the point P as 280 minus 80 square. That is the point we have checked. Minus 80 square we put in place of y. Then we will get 4a square t square, and the answer to that will be 280. So let us take 1 by root 6 is the slope. The slope of this m equal to 1 by under root of 6. Okay. So this is what we are getting. Now what he is saying is, suppose L intersects A and B, we have already marked there. Let R denote the length of the lattice rectum. Okay. So length of lattice rectum R. Let us write out R here. So R equal to, so if I put simply minus A here, so minus A here will give me minus plus 4a square, so x will be equal to plus minus 2a. So plus minus 2a. So length of lattice rectum is 2a minus minus 2a, 2a minus minus 2a must be equal to 4a. So we are getting R equal to 4a. Alright. Now what he is saying is R denote the length, S denote the square of the length of the line segment AB. So square of the length of the line segment AB. So S we have to find out, right. So for that purpose we have to find out alpha. Once we get alpha, we will be able to get the length of AB. So the slope of this line is here important. So what we will do, simply let us put 80 square, right. So minus 80 square minus alpha divided by this, okay. So let me put the slope of the normal. So let us differentiate this. What is the slope of the normal? Slope of the normal is 2x dx is equal to minus 4a dy. 2x dx minus 4a dy. So minus dx by dy. The slope of the normal is minus dx by dy. That is equal to how much? 4a by 2x. So that we can write out as simply 2a by x, right. So 2a by x. So that is equal to 2a by 280. 2a divided by 280. That's equal to 1 by t. 1 by t equal to 1 by root 6. So t equal to root 6. Firstly, we are getting this. So this t is nothing but root 6, because this line is also the normal, right. So this t is equal to root 6. So once we have this root 6, then we can further solve this more easily. So let us anyway put, now the slope is also 1 by root 6. So let us put here the slope of the line. Let us write this point as something q. So PQ. Okay. So the slope of the line, slope
of PQ. Alright, so what we have here, we have minus AT square, minus AT square, minus alpha is plus alpha, divided by x coordinate. So x coordinate is 280. So 280. This is equal to 1 by root of 6. Let us put the value of t. The value of t here is equal to root 6. So 6a. So alpha minus 6a divided by 2a. So this is 2a. Alright, and root 6. So ये root 6 equal to 1 by root 6. Root 6 is cancelled. So 2a on that side. So we get 8a equal to alpha. 8a equal to alpha. Alpha equal to 8a. This is what we are getting. So alpha is equal to nothing but 8a. Alright. Now R is to S is equal to 1 is to 60. So let us write out that. Now it's become quite simple. So alpha equal to 8a. So length of AB we have to find out. So obviously the length of AB here would be how much? Let us find out that. So for y equal to minus alpha, let us put here. For in this equation of your this equation, y equal to minus alpha, x will be equal to how much? Right. So y equal to minus alpha, x will be equal to under root of 4a alpha. Right. So 4a alpha, simple. Y equal to minus alpha, so x will be equal to under root of 4a alpha. So AB will be equal to, so I can write out AB. AB is equal to nothing but 2 under root of 4a alpha. Now alpha is equal to 8a. Right. So alpha is equal to 8a. That means what we can write out here, AB is this. So 8a over here. So 2 into 32a square. So we can write out 32. 32 is 4. So 2 into 32a square. Right? 4a alpha, 2 into 32 a square. So obviously then we can write out 8 root 2a. So this is nothing but AB equal to 8 root 2. 4 is out, 4 root 2 into 2 is 8 root 2 a. So this is what we are getting as AB. So then S equal to. So now let us write out S. So let me just instead of so let us write out S equal to AB square. This will be equal to 8 root 2 a ka whole square. This is equal to 128 a square, right? And R equal to, how much is R equal to? So R is equal to, we have already done R is equal to how much previous? R equal to 4a, right? So let us write out R equal to 4. R is equal to 4a. R is to S. Now what is given to us is just check the previous one. R is to S equal to 1 is to 16. R is to S equal to 1. R divided by S is equal to 4a divided by 128 a square. That is equal to 1 by 32a is equal to 1 by 60. This is what we have. Okay. So R is to S is equal to 1 by 16. Okay. So from here we get a equal to half. This gives us a equal to half. Right. And once we have a equal to half with us, so let us go back previous. So we have to find out the value of 24a. So obviously a equal to half we have obtained already. So 24a is equal to 12. That should be the answer.
All right. So the answer is 12. Right. So quite a simple thing in calculating. There should not take much time. ज़्यादा टाइम हमको नहीं लगना चाहिए इसमें. So this answer is to this question is 12. Let us go to the next question. बच्चों अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे. तो 13 में let the function f is 1 to infinity to all set of real numbers defined by this which is given, and define gx equal to 1 to x ft dt, x belonging to 1 to infinity. Let alpha denote the number of solutions of the equation gx equal to 0 in the interval 1 to 8, and beta equal to limit x tends to 0 plus, मतलब right hand side limit gx divided by x minus 1, then the value of alpha plus beta is equal to, right? So we have to calculate the value of alpha and beta and add them to get the answer, right? So अब हम क्या करते हैं कि पहले देखते हैं फंक्शन है क्या. तो ये फंक्शन हम ध्यान से देखते हैं तो हमको पता चलता है कि t इक्वल टू यहां से 1 से इंफिनिटी जाना है. तो t की वैल्यू जैसे n इक्वल टू 1, तो n इक्वल टू 1 पे आता है t इक्वल टू 1. सो f1 इज इक्वल टू हाउ मच. यहां से f1 देखते हैं तो एग्जैक्टली ये n को 1 रखने से -1 का होल स्क्वायर, दैट मींस f1 मस्ट बी इक्वल टू 2. नाउ लेट मी पुट n इक्वल टू 2. तो n इक्वल टू 2 रख के देखता हूं तो यहां पे मेरे पास आता है 4 - 1 3. सो t इक्वल टू 3. सो f ऑफ 3 इक्वल टू f ऑफ 3 इक्वल, तो n इक्वल टू 2 रखने से f ऑफ 3 इक्वल टू आता है, लेकिन यहाँ n इक्वल टू 2 रखने से -1 टू द पावर 3 आता है, तो ये आ जाएगा -2. राइट. अब मैं आगे का देखता हूं, जैसे ये n इक्वल टू 1 रख के देख लिया, n इक्वल टू 2 रख के भी देख लिया, हमारे पास जो वैल्यूज आ गई 2n - 2. अब हम बीच में अगर n इक्वल टू 1 और n इक्वल टू 2 के बीच में देखते हैं तो ये जो फंक्शन है उसको थोड़ा सा एग्जामिन करते हैं, तो हमको पता चलता है कि ये f ऑफ 2n - 1 इज नथिंग. जब t 1 और 3 के बीच में होगा तब यहां पे दिस इज t इज कमिंग, जैसे 2n + 1 माइनस, सो लेट अस फाइंड आउट t इक्वल टू 2 कब होगा. t इक्वल टू 2 के लिए हम इसको चेक करते हैं. अगर t इक्वल टू 2 के लिए, तो t इक्वल टू 2 के लिए n इक्वल टू 1 रखेंगे तो ये हमारे पास आएगा 3 - 2. तो हाफ ऑफ दिस एंड हाफ ऑफ दिस, एंड t इज अ सिंगल पॉइंट, दैट मींस इट विल बी अ लीनियर फंक्शन. सो लेट अस मेक अ ग्राफ. हम सिंपली देखते हैं कि हाफ ऑफ ये अगर t इक्वल टू 2 रखते हैं तो ये पूरा हाफ आ जाएगा f ऑफ 2n - 1, एंड दिस ऑल्सो विल कम हाफ f ऑफ 2n + 1. सो दैट मींस बेस्ट वे टू डू दिस क्वेश्चन, इसको अच्छे से हम सॉल्व कर पाएंगे अगर हम इसका ग्राफ बना लेते हैं. तो हम सबसे पहले इसका ग्राफ बना लेते हैं. वो सामने से ग्राफ नजर आ रहा है क्योंकि ग्राफ लीनियर है, तो सामने से हमको नजर आ रहा है. तो लेट अस मेक अ ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन. और हम ग्राफ कहां से बनाते हैं इसका, हम लेते हैं 1, ये लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8 तक ग्राफ बना लेते हैं एक बार. 8 तक ग्राफ बनाने का मतलब 1 पे जो इसकी वैल्यू आ रही है वो 2 आ रही है, सो ये 2. ओके. और 3 पे इसकी वैल्यू आ रही है -2, तो 3 पे इसकी वैल्यू आ रही है -2. तो 3 पे इसकी वैल्यू आ रही है -2. ओके. अब 5 पे इसकी वैल्यू जब वापस देखेंगे हम लोग n इक्वल टू 3 के लिए, तो n इक्वल टू 3 के लिए वापस आ जाएगी +2. सो ये आपका आ गया 1 2 3 4 5, 5 पे वापस ये आ जाएगी. राइट. और फिर यहां से ये, यहां से ये, यहां से ये आ जाएगा ये ग्राफ. लेट मी जस्ट ड्रॉ दिस. ये जो ग्राफ आएगा ये ऐसे आएगा, फिर ये ऐसे आएगा, फिर ये ऐसे आएगा आपका ग्राफ, और ये आ जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6 7, एंड यहां से ग्राफ जो आएगा 8 पे, तो 8 पे ऑब्वियसली ये जो ग्राफ आ जाएगा हमारा वो 0 आ जाएगा. तो दिस इज द ग्राफ. लेट अस गो लाइक दैट. ओके. तो बहुत सिंपल हो गया ये. ये हो गया आपका +2, ये हो गया आपका -2. ऑलराइट. सो दिस इज द ग्राफ. अप्रोक्सीमेटली नहीं है, ये एग्जैक्ट ग्राफ है बिकॉज इट शुड बी लीनियर.
ये लीनियर ग्राफ है हमारा, और ये हमारा आ गया आपका दिस इज 8, ओके नोट। तो ये आगे जा रहा है, उसकी वैल्यू आ गई। तो जहां पे भी ये आपका इवन नंबर है वहां तो 0 आ रहा है, और जहां ऑड नंबर है वहां या तो +2 आता है या फिर -2 आता है। तो ये ग्राफ के साथ आई थिंक वी शुड बी एबल टू डू दिस क्वेश्चन प्रॉपरली। सो लेट अस नाउ अंडरस्टैंड व्हाट ही इज आस्किंग। ओके, सो इफ ही इज आस्किंग gx, so gx is how much? 1 to x ft dt, x belonging to 1 to infinity. Let alpha denote the solutions of the equation. Gx is in the interval 1 to 8. Okay, so fx equal to 0. So obviously, sorry, gx equal to 0. So 1 to x. So if we differentiate g dash x is equal to how much? Obviously will be equal to fx. So he is saying gx equal to 0 in the interval this and beta equal to limit. So सबसे पहले g dash is equal to fx. Then what should we do? Number of solutions of this. So what will be the number of solutions of this? Let us find out. So अब ये आ गया हमारे पास कि gx इक्वल टू 0 का सोल्यूशन। तो हम देखते हैं कि 1 से 3 के बीच में, 1 से 3 के बीच में जो इसका 1 to x ft dt, ये इंटीग्रल 0 हो जाता है क्योंकि पॉजिटिव भी उतना ही है जितना नेगेटिव है। तो दैट मीन्स gx इक्वल टू 0 का जो हमारे पास आंसर है वो दिस आंसर, बिकॉज द एरिया अंडर दिस कर्व 1 to x fx dx, 1 से लेके उसका जो एरिया होना चाहिए वो 0 होना चाहिए, सिंपल। तो एरिया 0 कहाँ कहाँ हो रहा है? और स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 3 में एरिया इक्वल टू 0, 1 to 5 में एरिया इक्वल टू 0, 1 to 7 में एरिया इक्वल टू 0। 8 के बाद जाना नहीं है हमको, इसलिए ये जो एरिया जो 0 हो रहा है इसके 3 सॉल्यूशन है, मतलब gx इक्वल टू 0 हैज 3 सॉल्यूशंस। सो दैट मींस लेट अस राइट आउट कि जो वैल्यू ऑफ अल्फा है, अल्फा, लेट अल्फा डिनोट, तो अल्फा इज नथिंग, दिस अल्फा इज नथिंग बट अल्फा इक्वल टू 3। ये हमारे पास वैल्यू आ गई इसकी, बहुत सिंपल है, अल्फा इज इक्वल टू 3। अब हम आ जाते हैं बीटा पे। तो बीटा इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 प्लस साइड, मतलब राइट हैंड साइड लिमिट से हमको आना है, एंड डिवाइडेड बाय x माइनस 1। सो सिंस g डैश x इज अवेलेबल टू अस, तो हम एल हॉस्पिटल्स रूल लगा देते हैं इसमें। तो लिमिट, लेट मी जस्ट इवैल्यूएट हियर, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस साइड gx by x minus 1, x tends to 1 plus side में this is 0 by 0 indeterminate form. What is the indeterminate form here? 0 by 0. That means we can apply L Hospital's rule. So this is equal to limit x tends to 1 plus g dash x divided by 1. Right? Now g dash x is nothing but fx. So this we can write at limit x tends to 1 plus f dash fx divided by 1 only. This is nothing, fx1 is equal to plus 2. So this is equal to, limit is equal to plus 2. That means the value of beta की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है इक्वल टू बीटा इक्वल टू 2. So beta equal to 2. So alpha and beta, alpha plus beta must be equal to then 2 plus 3. 2 plus 3 equal to 5. So the answer should be 5. Let us go to the next question. आई थिंक थोड़ा सा देखने में ऐसा लगता है, लेकिन जो क्वेश्चन है वो बहुत सिंपल है अगर इसको एक बार समझ लिया जाए। लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 14. दिस इज पैराग्राफ, फर्स्ट वी हैव टू रीड द पैराग्राफ एंड आंसर क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 आई थिंक, ठीक है। सो लेट अस गो टू द क्वेश्चन नंबर 14 फर्स्ट। सो क्या बोल रहा है, लेट अस अंडरस्टैंड। So 14 is, let S be set 1, 2, 3, 4, 5. मतलब there are 6 elements in the set S, which are 1, 2, 3, 4, 5, 6, and X be the set of all relations from S to S. मतलब इसी सेट से इसी सेट पे हमको रिलेशंस R है वो सेटिस्फाई करने चाहिए बोथ द प्रॉपर्टीज जो दी हुई। क्या क्या प्रॉपर्टीज हमको दी हुई है? हमको दी हुई है R हैज एग्जैक्टली 6 एलिमेंट्स, मतलब जो रिलेशन के एलिमेंट्स है वो 6 होने चाहिए, और फॉर ईच ए बी बिलोंगिंग टू आर, मतलब आर में जो ये ए टू बी है तो
we have mod of a minus b should be greater than equal to 2. So mod of a minus b should be greater than equal to 2. Very good. There is no problem with this. बहुत सिंपल सा एक रिलेशन हमको बता रखा है. लेट y इक्वल टू नाउ x बी द सेट ऑफ रिलेशंस. तो जो ये x वाला जो सेट हो वो रिलेशंस को डिनोट करता है कि a से b में जो रिलेशन है उसको डिनोट करता है. ठीक है. तो y इज r बिलोंगिंग टू x, मतलब जो भी रिलेशन है वो x में बिलोंग करता है. तो रेंज ऑफ r हैज एग्जैक्टली वन एलिमेंट, राइट. तो रेंज ऑफ r एक ही एलिमेंट होना चाहिए. एंड z बिलोंग्स r बिलोंग्स टू x, r इज अ फंक्शन फ्रॉम s टू s. बस ये दो चीजें. n a डिनोट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट a. तो ये जो n a डिनोट्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब ये सब कंडीशंस लगा के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट a में आते हैं उसको हम बोलते हैं n a. तो देयर आर टू क्वेश्चंस based on this paragraph. तो हम क्वेश्चन पे चलते हैं. ओके, सो लेट अस गो टू द क्वेश्चन. नाउ इफ nx इक्वल टू mc6 देन द वैल्यू ऑफ ms. तो जो nx x सेट में कितने एलिमेंट सेटिस्फाई करते हैं वो हम देख लेते हैं. तो x सेट में जो सेटिस्फाई करते हैं, x सेट इज r फ्रॉम s टू s. ओके, और a माइनस b शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2. तो सिंपल है बिल्कुल. तो हम यहां लिखते हैं a, ये लिखते हैं b. a को लिखेंगे अगर 1 तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 में 6 तक क्या क्या आएगा, 3 4 5 6. कितने नंबर्स हो गए, 4. अगर b इसको लेते हैं 2 तो क्या क्या आएगा इसमें, लेट अस राइट आउट. सो दिस विल बी नाउ 4 5 6 3. ओके, नाउ 3 में लेते हैं तो क्या आएगा, 1 5 6. हमने 3 अगेन. 4 लेते हैं तो क्या क्या आएगा, 1 2 एंड 5 नहीं आएगा, 6. सो अगेन 3. 5 लेते हैं तो 1 2 3. तो अगेन 3 एलिमेंट्स. एंड 6 लेते हैं तो we'll get 1 2 3 4. how many elements, 4 elements, right. So a and b में if we count the number of sets here, number of relations here, तो यहाँ पे है 4, यहाँ पे है 3. तो 4 plus 4 8 plus how many relations here, 12. So there are how many relations here, 12 plus 8 20 relations. Okay, so 20 such relations are possible. Basically we have how many relations possible here, 20 relations are possible. So let us go to the pairs AB में there are 20 relations possible. So let us write out. So nx equal to mc6 then the value. nx equal to mc6 मतलब 20 में से 6 चूज करने हैं हमको obviously. So m is how much, 20. m should be the answer to m should be 20. Let me go back and explain यहाँ से. So we counted the 20 relations, 4 here, 3 here, 3 here, 3 here, 3 here, 4. So total 20. So 20 of them fall in the set X, right? So 20 C 6 because R has exactly 6 है. तो इन 20 में से हम कोई भी 6 चूज कर सकते हैं. तो obviously क्वेश्चन में कुछ भी दिया है but m, the value of m should be equal to 20. So we have written it here. Now let us go to the next question on the same paragraph. तो इसी पैराग्राफ में जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वो क्या है वो देख लेते हैं. okay? So ये क्वेश्चन नंबर 15. What is the question number 15? If the value of ny plus nz is k square, ny plus nz is k square, then the mod of k is. Let us find out ny. So let us read again what is y and z. Right? So y and z को हम वापस यहां पे एक बार पढ़ लेते हैं. ठीक है, तो यहां से देखते हैं y is r belonging to x. The range of r has exactly one element, right? r belonging to x मतलब ये जो हमने लिखा है x के लिए वही सही है, लेकिन r must have r is a the range of r has exactly one element. तो ये एक ही एलिमेंट होना चाहिए. तो ऐसा पॉसिबल है क्या, वो यहां से हम देख लेते हैं. तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं है कि वो सब में आता हो. जैसे रेंज ऑफ r हैज वन एलिमेंट का मतलब
1 का 1 के साथ पेयर, 2 का 1 के साथ पेयर, 3 का 1, तो 1 देखते हैं तो 1 इन 4 में आता है, फर्स्ट 2 में नहीं आता है, तो 1 इज नॉट पॉसिबल। 2 देखते हैं तो 2 इन 2 में नहीं आता है, तो 2 इज नॉट पॉसिबल। 3 देखते हैं तो 3 इन दोनों में नहीं आता है, इसमें भी नहीं आता है, तो इज नॉट पॉसिबल। 4 देखते हैं तो 4 भी 1 2 3 4 इन सब जगह नहीं आता है, तो 4 इज नॉट पॉसिबल। और 6 5 देखते हैं तो 5 भी यहाँ नहीं आता, यहाँ नहीं आता, यहाँ नहीं आता, तो इन तीनों में नहीं आता, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। और 6 भी पॉसिबल नहीं है, क्लियरली हमको नजर आ रहा है। इसका मतलब इन दोनों में 6 नहीं आता। इसका मतलब क्लियरली वी कैन से दैट ऐसा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है जिसमें ऐसा कोई सेट जिसमें रेंज ऑफ आर हैज एग्जैक्टली ओनली वन एलिमेंट। दैट मीन्स आई कैन राइट क्लियरली हियर दैट n ऑफ y इक्वल टू 0, बिकॉज ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। ओके, सो n ऑफ y इक्वल टू हाउ मच? 0, राइट। लेट अस कम टू n ऑफ z नाउ। तो z क्या बोल रहा है? r is a function from s to s. Now what he is saying is r is a function from s to s, right? तो इसका हम निकाल लेते हैं कि n is a function from, तो फंक्शन में हमको each element must have a unique for each element of x we must have a unique answer. तो unique answer में we have to just choose unique answers. तो unique answer very simple. We have यहाँ पे हमारे पास 4 possibilities हैं, तो unique answer will come out to 4c1 3c1 into 3c1 into again 3c1 again 3c1 again 3c1 तो again 3c1 तो 4 3 3 3 3 again, so 3c1 into 4c1, so this is 4c1. So this should be your unique answer. So unique answer में that means we have got this we can write out as nz. nz equal to 4 square into 9 square. Can we write 4 square into 3 square into 3 square? ऐसे लिख देते चलो. So this is 36 square. 36 square. Alright or not? nz equal to 36 square. So he is saying now let us go. So we remember ny equal to 0 and nz equal to 36 का square. So let us go now to ny plus nz equal to k square. So 0 plus 36 square equal to k square. Then mod of k. Mod of k is obviously equal to 36. That should be the answer to this question. Mod of k equal to 36. This is the paragraph question. Quite simple, I think. Very simple. Only you have to read the question and interpret this properly. Okay. So let us just come back here. Okay. So I hope this was quite okay. So here we have written the answer 20, and here we have written the answer 36. Okay. Let us go. तो इस पे आ जाते हैं पैराग्राफ। पैराग्राफ को पढ़ लेते पहले। f 0 to pi by 2 से 0 to 1 is a function defined by fx equal to sin squared x. Quite simple. Then let g function 0 to pi by 2 to 0 to infinity be the function defined by gx equal to pi x by 2 minus x square under root of the whole thing. Right. तो ये हमको पैराग्राफ सिंपली दिया हुआ है, fx gx इसमें दिए हुए हैं, उसकी डोमेन एंड को डोमेन दिया हुआ है। सो this should be, again let us go to the question. So question number 16. So what is question number 16? Let us the value of twice of 0 to pi by 2 fx gx dx minus 0 to pi by 2 gx dx is, तो ठीक है, question looks at least looking quite simple. So let us evaluate this integral. This is 2, let us take the integral as I1. So I1 equal to 0 to pi by 2 fx gx dx, right? So this fx is how much? 0 to pi by 2 sin squared x, 0 to pi by 2 में defined है, and gx equal to, so what is gx equal to? Let us just check back. Right, so gx equal to under root of pi x by 2 minus x square. So under root of pi x by 2 minus x square.
right? And this is dx. So let us evaluate this integral. Looks quite simple. तो हम क्या करते हैं इसमें, वो डेफिनेट इंटीग्रल का जो प्रॉपर्टी है वो लगा देते हैं, a प्लस बी माइनस एक्स. ओके, तो वो प्रॉपर्टी लगा देते हैं. तो I1 इज ऑल्सो इक्वल टू, दैट मीन्स I1 इज ऑल्सो इक्वल टू, यहां से पाई बाय टू माइनस एक्स और यहां भी पाई बाय टू माइनस, दिस विल बिकम कॉस स्क्वायर एक्स. सो I1 इज 0 टू पाई बाय टू कॉस स्क्वायर एक्स अंडर रूट ऑफ पाई बाय टू इंटू पाई बाय टू माइनस एक्स माइनस पाई बाय टू माइनस एक्स का होल स्क्वायर, राइट. एंड इसको कर देते ब्रैकेट में बंद dx. ऑलराइट, आई थिंक इसको जब हम एक्सपांड करेंगे तो क्या आएगा, पाई बाय टू इंटू पाई बाय टू में पाई स्क्वायर बाय 4 इज कैंसिल्ड, माइनस पाई बाय टू एक्स, राइट. तो वहां से आ जाएगा प्लस पाई एक्स, तो पाई बाय टू एक्स आ जाएगा एंड यहां से एक्स स्क्वायर आ जाएगा. सो दैट मीन्स द सेम थिंग इज कमिंग अगेन. सो लेट अस राइट आउट दिस I1 is equal to 0 to pi. On solving, on expanding this, we are getting cos squared x and under root of same thing, pi x by 2 minus x square dx, right. So ये I1 जो साइन स्क्वायर्ड एक्स है वही कॉस स्क्वायर्ड एक्स के साथ भी आ जाता है, दैट मीन्स 2I1. तो लेट अस राइट आउट. तो इन दोनों को ऐड करते हैं तो साइन स्क्वायर्ड एक्स प्लस कॉस स्क्वायर्ड एक्स दोनों मिलके हो जाएंगे 1 and under root of pi x by 2 minus x square will be common. So we can write out 2I1 is equal to, in fact ये लिख देते हैं इंटीग्रल, ये इंटीग्रल 0 to pi by 2 pi x by 2 minus x squared dx, right. This is 2I1 and this is nothing. अगर हम देखते हैं पीछे तो ये जो इंटीग्रल है वो nothing, this is gx only, right. So this 2I1 is equal to 0 to pi by 2 gx dx. बहुत अच्छा. So let us take this integral. ये हमको याद रहेगा 2I1 equal to how much, under root of pi x by 2 minus x square 0 to pi by 2 dx, and this is nothing but gx dx. So let us go back. यहां आ जाते हैं. तो यहां हम देखते हैं कि ये जो वैल्यू है gx की यही है, इसलिए अब हम यहां आ जाते हैं. तो ये जो 2I1 है, सिंस दिस 2I1 इज नथिंग बट इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 0 to pi by 2 gx dx, यही हमने इवेल्युएट किया है. तो gx dx माइनस gx dx, हाउ मच इज दैट, 0. So this is 0. Very simple, because this twice of I1 is coming equal to gx dx only. So this gx dx, integral of gx dx minus integral of j must be equal to 0. Quite simple this one, right. So this answer should be 0. All right. Okay. Now let us go to the next question. Next question is 17th question. 17th question. The value of 16 by pi cube 0 to pi by 2 fx gx dx. तो यहां से अभी हमने जो कैलकुलेट किया था, हमको याद है कि दिस शुड बी इक्वल टू 16 by pi cube 0 to pi by 2. This value was nothing but, this whole integral was nothing but I1, and I1 की जो वैल्यू थी, ये I1 की वैल्यू थी हाफ ऑफ इंटीग्रल ऑफ पाई बाय 2x माइनस एक्स स्क्वायर 0 to पाई बाय 2 dx. राइट, देखिए प्लीज वापस बता देता हूं. I1 इक्वल टू यही था एंड दिस इज fx dx. हमने प्रूव किया था कि दिस वाज इक्वल टू 2I1. राइट, लेट मी गो बैक प्रीवियस. ये देखिए, यहां से हमने ये I1 इंटीग्रल निकालने की कोशिश की थी, तो ये आया था 2I1 इक्वल टू दिस, दैट मीन्स I1 इक्वल टू हाफ ऑफ दिस, राइट. सो हाफ ऑफ दिस वी आर राइटिंग दैट, क्योंकि पैराग्राफ का क्वेश्चन है तो जो भी हमने पहले इवेल्युएट किया हुआ है उसको हमको यूज करना पड़ेगा, राइट. सो 16 by टू हाफ. सो लेट मी राइट आउट, ये हाफ में यहां लिख देता हूं, अंडर रूट ऑफ पाई एक्स बाय 2
माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो ठीक है, इसको होल स्क्वायर बना लेते हैं। दिस इज अ स्टैंडर्ड इंटीग्रल, इसको होल स्क्वायर हम लोग बना लेते हैं और वील यूज इट। सो लेट अस राइट आउट, ये आ जाएगा, हाफ को बाहर ले लिया मैंने, 8 बाई पाई क्यूब, राइट, 0 to 5। ओके, तो लेट मी राइट आउट अंडर रूट, ये अंडर रूट, तो पाई बाई 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। पहले तो ये आ जाएगा पाई बाई 4 माइनस एक्स, तो यहां से आ जाएगा माइनस ऑफ ये माइनस, तो ये आ जाएगा पाई एक्स बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां से वी विल गेट सिंपली पाई स्क्वायर बाई 16, या वी कैन राइट पाई बाई 4 का होल स्क्वायर। सो लेट मी राइट पाई बाई 4 का होल स्क्वायर, राइट, एंड दिस होल थिंग इज dx। ये तो बहुत सिंपल है, दिस इज अ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वी हैव टू यूज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऑफ दिस इंटीग्रल। So this integral under root of a square minus x square. So that should be quite simple. So let us write out the answer directly of this integral. Let me write out here the formula for you. Integral of under root of a square minus x square dx is equal to, how much is this integral equal to? Okay, so this is equal to half of x under root of a square minus x square, half of x under root of a square minus x square plus sine inverse of x by a, is it? Sine inverse of x by, so half of this one a square and plus this is what? Okay, so this is the thing. So we have to use this over here. Simple, right? So use this over here. Let us write out what this is the formula we have with us. 8 by pi cube is out. So let us write out here 8 by pi cube. That we'll write out here. But then this integral will be how much? So half. So half let us take out. So half we have taken out. Okay, and x. X की जगह we have pi by 4 minus x का whole square. Okay, and under root of a square minus x square, so under root of a square minus x square, and then we have a square sine inverse of x square. So pi by 4 minus x under root of pi x by 2 minus x square plus a square. A square is nothing but pi square by 16, pi square by 16 sine inverse of x by a. X by a is pi by 4 minus x divided by pi by 4. This is pi by 4. Okay, and this will be from 0 to pi by 2. Right? And also, since coefficient of x is multiplied by minus, so we will have to write out minus here also and minus here also. So let us write out that. So we will write out 1 minus, this will be, this is minus, and this also will be minus. So this is also minus. Alright. So now we have to just put the limits. So we can put out the limits first pi by 2 and minus 0. Right. So putting the limits, we are getting the integral as, we can put the limits simple and to half here. So we can get the answer here as 8 by pi cube into half into. Okay. So putting the limit.
तो माइनस को प्लस करना, तो पहले 0 रख देते हैं, फिर ये रख देते हैं। 0 रखने से ये तो हो गया 0, राइट, और 0 रखने से ये हमारे पास हो गया 1. This will come as equal to, this will also come as equal to plus pi cube by 32. Alright, so this is coming as equal to 4 by 16. So 4 divided by 16 equal to 1 by 4 equal to 0.25. Very simple. Right? तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ गया, इसका आंसर आ गया 0.25. ओके, राइट, 1 by 4. ओके, तो क्वेश्चन क्वाइट सिंपल है, दोनों जो क्वेश्चन थे, और अब हमने सारा पेपर क्वेश्चन नंबर 17 तक कंप्लीट कर लिया है. सॉल्यूशंस आपको अच्छे से अच्छे देने की हमने कोशिश की है. धन्यवाद.